बजेटला नक्की बजेट करा आणि तुमच्या सगळ्या प्रश्नांचे सोल्युशन मी घेऊन आलेलो आहे. तर लक्षात ठेवा, खाली दिलेल्या सबस्क्राईब बटनला क्लिक करायला विसरू नका. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला बघायला भेटतील. नवनवीन व्हिडिओ पाहण्याकरिता खाली दिलेला जे बेल आयकॉन आहे त्या बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि जर आवडलं तर नक्की लाईक करा. लाईक करायला विसरू नका आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा. In that first module, today we are going to start that the first module was simple stresses and strains. Okay, so myself, Professor Kulkarni NK, I will start with the lecture. So here, what is first the introduction? Okay, what is basically the introduction was there. So we will start with that. So for the introduction, first, what is mechanics of solids? So mechanics of solids is basically the study of internal effects, that is the stresses and strains which are caused by external loads, forces and moments acting on a deformable body or the structure. Means what? Here, whenever the body, means when a structure was there and that structure is carrying an external force, okay, and if on that body, if we are going to apply a force, that body is going to deform. Okay, body is having little bit displacement, body is getting certain shapes are going to be changed. That body, if the stress shapes are changing, if it will get the deformation, how much it will deform, particularly how much it will resist first. Okay, that is the study, that is the stresses, the strains, that forces, what movements comes, all those studies which we are going to do, which we are going to understood, that is nothing but your mechanics of solids. It is also known as the strength of materials or mechanics of solids. So why to learn this? Means after learning this subject, what we will get basically. So first point which we will get, that as here is your basic first objective was strength. We will get the strength. Strength means what? Strength means how much it will take, the capacity. Okay, always I used to told student, मैं जनरली थोड़ा हिंदी में भी ट्राई करूंगा अभी. तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा एक एग्जांपल बताता हूँ. स्ट्रेंथ मतलब क्या है और डिफॉर्मेशन मतलब क्या है और स्टिफनेस, स्टेबिलिटी सभी बताता हूँ मैं. तो सबसे फर्स्ट स्ट्रेंथ मतलब क्या है. राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन ए चेयर. ओके, लाइकवाइज व्हाइल देयर वाज फंक्शंस, जब फंक्शंस वगैरह रहते, शादी वगैरह रहते हैं ना, तो शादी में वगैरह क्या रहता है, हम लोग क्या करते हैं, चेयर में जाकर बैठते हैं. तो वहां पर चेयर्स क्या रहते हैं, वीक रहते हैं. तो मेरे जैसा अगर वहां पर कोई बंदा बैठेगा तो क्या होगा, उसको वो चेयर के पैर जो रहते हैं वो क्या होते हैं, इट विल स्टार्ट डिफॉर्मिंग, इट विल स्टार्ट डिस्प्लेसिंग. वहां पर क्या होता है, फिर वो स्ट्रेच होना चालू होता है. तो हम क्या करते हैं, फिर दूसरा एक चेयर उसमें डालते हैं. मतलब वी आर इंक्रीजिंग दी its width, and if we are increasing its width, what it means, we are giving strength to that. मतलब वो कितना स्ट्रांग है वो. तो आई नीड टू नो दैट पहले से ही कि एक जनरल नॉमिनल वेट ऑफ ए पर्सन, means for a structure also what is the general loads are going to become, and how much width, how much depth, how much length I should kept for that beam, how much height I should kept it for the column, what is the depth of the slab, all those things I need to be decided first. Then and then only, means after studying this I will get the strength. Second, deformation. Deformation already I explained to you, it is displacement. Matlab if I applied a load on that body, it will get deformed there, and that deformation is nothing but the strain also. So this we will learn after the MOS. If we study the MOS entirely, then we will learn that also. Stiffness. Stiffness means what? It is the ability to resist the deformation. Load needed to cause a specific deformation determined by the stress-strain relationship. So stiffness is what here? Stiffness means ability to resist. How much we will resist, that factor is known as the stiffness factor. Okay, so that we will learn also in the MOS. Stability, whether the structure is stable or it is having little bit the shakes, it is having any deformation, that also we need to check it. Second, now some bodies we have learned there, that is the rigid body, elastic body and plastic body you have learned in the mechanics. But also I will go through here the rigid body. Rigid body means what? The person is hammering to that stone,
but that stone was not having any deformation. Means if we apply a force on a body, then that body does not deform, it does not displace, it does not changes its dimension, then even after removal of the force it is having no impact, then that is called as rigid body. Okay, this we have learned it. Next, elastic body. What is elastic body? In the elastic body, look at to that figure very carefully. What earlier there was no load. Okay, earlier there was no load. If I applied the load there, what happened? There was a change in the that spring. It will get extended, and again if I remove the loads, it will regain to the original position. It will regain to the original length. Then that is called as elastic body. So what is elastic body? Then elastic body is nothing but if we apply a force on a body, that body will get deformed, but if we remove that force, body will regain to the original shape and size. That is called as elastic body. Remember this. Okay, so what is plastic body now? So with a hammer, what I have done, that there was a cube there, and I have just applied a force on that hammer, so it will get deformed there, and it is not possible even after removal of that force, they have not regained to the original position. So that phenomena is called as the plastic body. That structure was get collapsed immediately. That is the funda for the plastic body. Have you got it? Okay. So I will go for the further. Now the first concept which we are going to learn in the simple stresses and strain, the name itself was there, that is the stress. Stress in day-to-day life, we all are having the stress. Headache was there, someone's stomach pain was there, everywhere the stresses are going to be caused. What is the stress? So internal resistance offered by that body. Internal resistance offered. So that figure was there, one lady was there, she was stucking her head to the, particularly to the, what is called as the wall. So what happened then? Whatever the head here, how much was the area was there ना? Once वो जब लड़की जो है ना वो क्या कर रही है, जब पत्थर को सॉरी दीवार को जब अपना सर पटक रही है, तो दीवार को सर पटकते वक्त जितना भी एरिया है यहाँ पर, वो एरिया क्या करता है? रेजिस्टेंस देता है. अंदर से हमको पेन होता है. पेन होता है मतलब क्या है? There was a certain resistance was offered. Okay. देखो मैं और एक एग्जांपल हमेशा बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि हम लोग जब चलते हैं, ओके, व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन ए सरफेस, तो तब क्या होता है? सर्टेनली नीचे के सरफेस से भी क्या आता है? रेजिस्टेंस आता है. हमारा जो वजन है, हमारा जो वेट है, उसको रेजिस्टेंस करने का काम कौन करता है? तो नीचे का फ्लोर. देखो अगर अभी बारिश का सीजन है, तो अगर अभी आप लोग जो चिक्कड़ रहता है वहां पर अगर आप लोग वॉक करेंगे, तो वो क्या करेगा? रेजिस्टेंस नहीं करेगा, हमारा पैर क्या करेगा? नीचे डिफॉर्म हो जाएगा. So there was not resistance, was not there. Okay, so that is the phenomena. So I will read that definition then. When a body is subjected to some external force, the body undergoes some deformation, and it offers internal resistance to the deformation. So that internal resistance offered, that is internal resisting force offered per unit cross sectional area is called as stress. देखेंगे और आगे देखो यहाँ पर एक फिगर है, ये फिगर में आप लोगों को पता चलेगा. यहाँ पर क्या है? एक फोर्स है, इसको क्या किया? यहाँ पर स्ट्रेच किया गया, ये साइड और ये साइड, दोनों साइड को क्या किया? स्ट्रेच किया गया. सो इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ पर ऑफर्ड होता है? यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है. यहाँ पर here it is the resistance was offered here from this point, it is, let us say, the breaking point was there. तो यहाँ से क्या होता है? internal resistance. When this force is applied to the left side, it will create the resistance to the right side. If this force is stretching this particular force towards the right side, this will make towards the left side. Okay, so the same was there here. It is also one image was there internally, how that molecules are connected to the with each other if they stretched. So what happened then? Once we stretched that, what is there? Once that is stretching also, that is also getting the stretched there, that molecules are getting little bit spread. So that is the internal resistance offered. So for the stress, we all know that the applied force, particularly here in this figure, the applied force was here P. So applied force was here P with the equilibrium equation.
due to this applied force only the resisting force was there. So with the summation of Fx is equal to 0, that is the equilibrium equation if we use, then we will get the applied force is equal to the resisting force. Second, then the formula for the stress was there, internal resisting force divided by area of cross section. So definition was there, the internal resisting force per unit cross sectional area. So here it is per unit cross sectional area. So internal resisting force is nothing but the applied force. So applied force divided by cross sectional area. Stress was denoted with a symbol sigma, and that is sigma is equal to applied force was P divided by the area was A. So where sigma was stress, P is the applied force and A is the area. So its unit was Newton per mm square or kilonewton per meter square. That is the load unit was Newton, load unit was kilonewton, area unit was taken as mm square or meter square, or it is in the centimeter square, kilometer square, anywhere. But if we take it as a Newton per mm square, then that we are going to treat it as megapascal, MPa. And if we go for the kilonewton per meter square, then that we are going to take it as the gigapascal. Okay, so once we have learned the stress, we will need to go for the strain. Listen that again, there was a lady was there who was working with on her laptop or whatever that the person was working on the laptop. So onto her neck, जो उसकी गर्दन है वहां पर क्या हो रहा है, स्ट्रेन आ रहा है. मतलब वहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं, डायमेंशंस में क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहे हैं. So that is called as the strain. So देखो strain मतलब क्या है, when a body is subjected to the external force, there is some change in the dimension. मतलब मैं अगर रबर लेता हूँ, रबर को मैं क्या करता हूँ, खींचता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, that rubber will get under certain deformation, that is called as the change in dimension, and the ratio of change in dimension to the original dimension of the body is known as a strain. So change in dimension to the original dimension का अगर रेशियो लेते हो तो उसको क्या बोलना है, हमको strain बोलना है. And how it is denoted? So it is denoted with small e. Remember this. So here you can check it. Here the forces were applied here in a tensile manner. वो खींच रहा है उसको, तो खींचने के बाद वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेच आ रहा है, यहाँ पर क्या होने वाला है, स्ट्रेच आ रहा है. जैसे स्ट्रेच आ रहा है, स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे. एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, अभी वो खींचते ही जाएगा, वापस नहीं आएगा. So that is the change in dimension was there little bit. So that change in dimension last को जो रहता है, देखो stretch जो रहता है ना, that is very nominal. Change in dimension was very nominal. Original dimension we will to take it that. So strain will get the very small value, that is the strain. Remember this? Have you got it? The strain concept, that is the change in dimension to the original dimension. Now, what are the types of stresses or types of strain? So types of stresses or types of strains are tensile stresses or strains, compressive stresses or strains, and shear stresses or shear strains. So I will repeat once again. The types of stresses are tensile stresses or strains, compressive stresses or strains, and shear stresses or strains. We will go one by one. What is tensile stress? You can look at to this figure here. Here we are having one figure. वहां पर क्या हो रहा है, वो एक what we call as there was a one bar of a rectangular section और a square section. उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, खींच रहे हैं दोनों साइड से. ऊपर भी दिखा है आपको, यहाँ पर दोनों साइड से क्या हो रहा है, हमको पुल कर रहे हैं उसको. सो वहां पर क्या होने वाला है, खींचने वाले हम लोग, तो स्ट्रेच आने वाला है. सो वी आर गिविंग ए टेंशन देयर. सो वहां पर क्या होने वाला है, स्ट्रेच आता है. तो जब स्ट्रेच आता है, जब खिंचाव आता है, तब यहाँ पर इंटरनल जो क्रॉस सेक्शन रहता है, वो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है. बट लेंथ क्या हो रहा है, लेंथ इज गेटिंग इंक्रीज्ड. रिमेंबर दिस. ओके, तो हियर अगेन, हियर ऑल्सो यू कैन चेक इट. यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, खींचते खींचते एक पॉइंट पर जाकर वो क्या होता है, ब्रेक होता है. दैट ऑल्सो वी विल लर्न. देयर वाज वन फिनोमेना, दैट इज द हुक्स लॉ एंड ऑल्सो द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. वहां पर भी ये पॉइंट आने वाला है. तो यहाँ पर हम लोग खींच रहे, तो वो रॉड था, वो रॉड को हम लोग क्या किए, खींच रहे. वहां पर हम लोग टेंसाइल फोर्स अप्लाइड किए, पुल कर रहे उसको. तो वहां पर क्या होता है, फिर लेंथ क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है. एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, वहां पर बीच में रिड्यूस होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है.
Hence it is always a positive, मतलब लेंथ क्या होती है, बढ़ती है, लेंथ बढ़ने वाली है, मतलब स्ट्रेन क्या होगा फिर यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, अगर कम होता है तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा. रिमेंबर दिस. सो विल चेक दैट आल्सो देयर. सो हियर सिग्मा इज नथिंग बट P by A. Stress was here P by A. So that is the formula. For strain, strain के लिए formula क्या है, delta L by L. That is change in length by original length. Here the length was changing, so hence it was mentioned as change in length by original length, change in dimension by original dimension. If width is changing, then what we are going to mention there, change in width by original width. If depth is changing, then change in depth by original depth, like this. So here the length was changing, that's why change in length by original length. Got it? So this is your टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन. टेंसाइल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला वही रहेगा जो स्ट्रेस के लिए है, P by A, फोर्स अपॉन एरिया, एंड हियर इट इज आल्सो हैविंग द change in length by original length for this. And remember here the stress is having unit as Newton per mm square or kilonewton per mm square, that is what is called as gigapascal, sorry, megapascal or gigapascal. But for E, that is no unit, that is for the strain there was no unit because it is having the ratio of same quantity, that is change in length by original length, both there are the length. So length maybe we are going to take it as in the meter or in the centimeter, so there is no change particularly in the that dimensions, so hence E is unitless, strain is unitless, remember this. Next, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. अब हम उसको क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं दोनों साइड से. जब पुश करने वाले, जब कॉम्प्रेस करने वाले, तो क्या हो रहा है, बीच में का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट लेंथ क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है. इफ वी गिव द पुश देयर, that is going to be compressed. If it is going to be compressed, that cross sectional area in between that is going to be increased. Remember this. Okay, now for this also, here it is, we have applied a compression there, then that is going to be increased with the cross sectional area. So here length is decreases, but the cross sectional area is increases, hence it is compressing, so that is negative. लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, दैट स्ट्रेन वाज ऑलवेज नेगेटिव. सो हियर फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेस वी आर हैविंग फॉर्मूला, हियर फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेस वी आर हैविंग फॉर्मूला एज P by A only, the same force upon area, applied force upon area, cross sectional area. But for the compressive strain what we are having, again change in length by original length. यहाँ पर चेंज किस में हो रहा है, अगेन लेंथ में ही चेंज हो रहा है, फोर्स जो डायरेक्शन में अप्लाई किया है उसमें ही चेंज होने वाला है. दैट्स व्हाई वी टेक द चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हियर आल्सो फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेस. नाउ वी विल गो फॉर द शियर स्ट्रेस. शियर मतलब क्या है, कटिंग एक्शन है. शियर में क्या होने वाला है, कट होने वाला है, कटिंग एक्शन होने वाला है. देखो यहाँ पर दो इक्वल एंड अपोजिट टेंजेंशियल फोर्सेस लगाए, एक यहाँ पर बोल्ट है, वहां पर एक बोल्ट फिक्स किया हुआ है. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड करते हैं. तो जैसे हम लोग यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीच में से ये क्या हो रहा है, कट हो रहा है. पहले ऐसा एक बोल्ट था, नट बोल्ट था यहाँ पर फिक्स किया हुआ, यहाँ से क्या हो रहा है, कट हो रहा है. नीचे भी दिखा है यहाँ पर आपको, जैसे हम लोग यहाँ पर लोड को अप्लाइड करते हैं, ये बीच में से क्या होता है, टियर होता है, कट हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन. शियर स्ट्रेस, यहाँ पर क्या हो रहा है, कटिंग हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है. इंटरनल रेजिस्टेंस कहां पर आने वाला है, सो यहाँ पर जो चेंजेस हो रहा है. सो दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया वी नीड टू टेक इट, रिमेंबर दिस. तो नेक्स्ट देन शियर स्ट्रेन, देन शियर स्ट्रेस. शियर क्या है, देखो कटिंग एक्शन. तो जैसे हम लोग ऐसा भी एक फोर्स लगाते हैं, तो कभी कभी प्लेन में ऐसे डायगोनली भी क्या होता है, कटिंग एक्शन आ जाता है. सो शियर विल टेक्स प्लेस देयर. सो व्हाट इज द शियर स्ट्रेस देन, शियर स्ट्रेस वाज द शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया. शियर एरिया मतलब क्या है, तो जितने एरिया में शियर हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो फोर्स लगा रहा है यहाँ पर, बट कटिंग हो रहा है ये डायगोनल इस पर, तो वो डायगोनल एरिया हमको वहां पर लेना है, रिमेंबर दिस. तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्स यहाँ पर लगा रहे, तो ये एरिया नहीं लेने का हमको, कौन सा एरिया लेने का है, जहां से वो कट हो रहा है. So that is the shear force divided by shear area, and that shear stress was denoted by tau.
Compressive and tensile stress was denoted with sigma, but the shear stress was denoted with tau. Okay, and it is given as shear force divided by shear area. We'll go for the shear strain also. So normal stress कैसे रहते, देखो यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस ये कॉम्प्रेसिव दिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉम्प्रेस करता है, बट यहाँ पर shear में क्या होता है, ऐसा स्ट्रेस होता है, यहाँ से shearing कटिंग एक्शन हो रहा है, ऐसे shear हो रहा है, डायगोनली क्या हो रहा है, टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये टेंजेंशियली यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होता है, और एट द एंड हियर इट इज आल्सो क्रिएटिंग दिस द फ्रिक्शन फिनोमेना दैट वी हैव लर्न देयर. ओके, सो वहां पर शेयरिंग एक्शन होता है. तो ये शेयरिंग एक्शन सिविल इंजीनियरिंग में कहां पर रहता है, तो जब विंड फोर्स आते हैं, जो विंड फोर्स आते हैं या अर्थक्वेक फोर्सेस आते हैं, तो वो टाइम पर क्या होता है, शेयरिंग एक्शन आ सकते हैं, जैसे कटिंग एक्शन आ सकता है, तो वो शेयरिंग एक्शन, उसके लिए हमको ये शेयर स्ट्रेस कितना आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना अफोर्ड करता है, वो स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, so that is called as the shear stress. Have you got it? What is shear stress? Okay, shear stress समझ में आ गया आप सभी को? Okay, so what we will go for the next term, that is elastic limit. Okay, so elastic limit was there. So what is that elastic limit फंडा now? So वहां पर एक रबर बैंड दिखा है, वो रबर बैंड क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं. So there was a इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट मतलब क्या रहता है, हम लोग उसको फोर्स अप्लाइड करते हैं, इट विल गेट स्ट्रेच्ड बट इट विल रिगेट टू द ओरिजिनल पोजीशन अप टू सर्टेन लिमिट. दैट लिमिट वाज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट. रिमेंबर दैट. हियर द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू दिस लिमिटिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिक लिमिट. जो जितना फोर्स हम लोग उसको खींच सकते हैं, लेट अस से मैंने वो रबर को क्या किया, पहले खींचा, it will stretch up to, let us say, the 10 kilonewton load. After 10 kilonewton load, it is going to be change its position, means the body is converting to the elastic body to the what we call it as the plastic body. Now it is not going to be deformed. So elastic body को हम लोग कहां तक खींच सकते हैं, to remain that body as elastic, that is up to 10 kilonewton. For example I am telling. So ऐसे हम लोग इसको एक certain limit रहता है, that force we need to calculate, that is nothing but the elastic limit. Beyond the elastic limit, material goes into the plastic stage. Okay, and in this stage the body will not regain its original shape and size on the removal of the force. Also there will be residual deformation in the material. So already I have shown to you that what is the elastic body and what is the rigid body, what is elastic body and what is plastic body also. So elastic body and plastic body, once that we are going to cross that elastic limit, the material or that particular whatever the structure was there, that is going to be converted into the plastic stage. Okay, so this is there. Are you getting? Okay, so I will go for the further part, that is the Hooke's law. What is Hooke's law? Then Hooke's law was one part here, that is when we applied particularly, means remember that that for the before the elastic limit, I will come to that part, elastic limit. What happened particularly in the elastic limit, remember that in the universe, everywhere, every material, even our body also, even for the building, even for the roads, even for the trees, whatever you can see in the universe, everybody is elastic. Everybody is elastic, but it is up to certain limit. Okay, if you say that no, there was a rigid body was there, you can say that this is a rigid body. If I am applying a force here, okay, that force was very small force. If I take a hammer and hammer it here, this is going to be deformed surely. Okay, so like this, everybody was there. It is a what we will call it as, it is a rigid body, sorry, it is a elastic body. Everybody in the universe, it is a rigid elastic body up to certain limit. If that elastic limit reached, after that what happened, that body is going to be converted into the plastic body, means there it will not going to be regained its original shape and size. So Hooke's law में क्या देखो, वहां पर एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे, वो चेंज नहीं हो रहा है, बट अगर जब ज्यादा फोर्स लगता है उसके बाद में क्या होता है, इट विल गेट कन्वर्टेड टू द प्लास्टिक बॉडी, मींस वो डिफॉर्म हो गया, उसके बाद में वो जॉइंट होने वाला नहीं है. सेम फिनोमेना है हमारे हड्डियों में, हमारे बॉडी में.
हमारे बॉडी में भी कैसा रहता है, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, एक पॉइंट तक क्या होता है, इसको फोर्स लगता है, ठीक है। एक बार यहाँ पर अगर ब्रेक आ गया, अगर ये हड्डियां टूट गई, तो हड्डियां टूट जाने के बाद क्या होने वाला है, फिर बाद में इट विल नॉट गोइंग टू बी रिगेन्ड एज ए ओरिजिनल पोजीशन। हम लोग उसको आर्टिफिशियली कैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट जैसे पहले पोजीशन में था वैसे हम लोग इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। दैट इज हुक्स लॉ। देखो हुक्स लॉ क्या कहता है, देखो फिर हुक्स लॉ, एक हुक्स साइंटिस्ट था, उसने ये एक लॉ बनाया। एक क्या लॉ है उसका, वो देखो, तो वो क्या बोलता है, देखो हियर हुक्स लॉ, व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड, व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड within its elastic limit, not, it is not going to cross its elastic limit, remember that, it is within elastic limit, the stress produced is directly proportional to the strain। मतलब अगर मटेरियल क्या है, इलास्टिक लिमिट के बीच में ही है, तो वो क्या करेगा, हमको वहां पर क्या करने वाला है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन देने वाला है, रिमेंबर दिस। Also, the same was here, the second statement for the Hooke's law. It is observed that when a material is loaded such that the intensity of stress is within a certain limit, the ratio of intensity of stress to corresponding strain is a constant। मतलब क्या है, एक तो क्या होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, या स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज नथिंग बट ए कांस्टेंट आ जाएगा। रिमेंबर दिस हियर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रहेगा, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट इनटू ई आ जाएगा, ठीक है। दैट इज सिग्मा बाय ई इज नथिंग बट कांस्टेंट। सो वो कांस्टेंट जो रहता है ना, उसको दो नाम दिए गए हैं, इट मे बी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट मे बी मॉड्यूलस ऑफ rigidity, so that we will see one by one. So prior to that I will show you one video then, okay, I will show you one video. Hooke's law. Experimental study by Hooke revealed that elastic bodies regain their original configuration completely only up to a limit. He termed this limit as elastic limit. He found that within the elastic limit, the extension produced in the wire was directly proportional to the load applied. That is, stress is directly proportional to strain. Stress is equal to E into strain, where E is constant and is called modulus of elasticity of the material of the body. Let us perform an experiment to understand Hooke's law. Experimental verification of Hooke's law. The apparatus is set as shown above. The weights are loaded one by one and unloaded one by one to bring the spring to its elastic mode. Weights are then added in the pan and reading of pointer on the scale is noted. Some more weights are added and the readings are noted once again. The difference between the two gives the extension in the spring due to the weights added in the pan. The procedure is repeated for other weights. On plotting a graph between the load and extension, one gets a straight line as shown below. Thus, the graph verifies the Hooke's law. Let's do a small experiment to understand the stress-strain curve. You see this thin steel wire? Let's see how its deformation happens. On the right, you can see the stress versus strain curve of the steel wire. Now, when the steel wire is under continuous tensile stress, as expected, it elongates. Now, look at the graph. The elongation is linearly proportional to the applied stress. So, this region in the graph is what it is. If the stress, that is the load, is released, what will happen? See there, the steel wire gets back to its original length. Now, within this stress limit, the steel wire follows Hooke's law. What it means is the deformation is elastic. Now let's increase the load further. And what do we see? After a certain point, look at the graph. The wire is not following Hooke's law. That is, stress is no longer proportional to the strain. But if you release the stress, the wire still goes back to its original length. The limit of this behavior in stress-strain curve, that is this point, is known as the yield point.
Now, if we increase the stress further, the strain will also increase, no doubt, but it will not follow Hooke's law. What it means is, even if there is a very small increase in stress, the deformation will be much more, and the wire will not return to its original length even after we release the stress. So in this range, we can say that the deformation is plastic. And what happens? You increase the stress further, as expected, the wire will ultimately break. And that is the breaking point. Sorry, one more point that we have left, that is the shear strain. Sorry, shear strain formula I have not explained, I think. Sorry, I skipped that. I will go once again to that point, and I will cover that also. What is the shear strain here? It is shear stress that we have learned. It is the equal and opposite forces which we used to apply there. Formula for it is denoted as the tau. It will be P by A. Now for the shear strain now. Shear strain here it is. So how it was there? When we apply a force here, it is going to be displaced. Okay. Whenever we are going to apply a force here, it is going to be displaced like this. So let us consider like this one rectangle, whose rectangle is having dimension, the name was given as ABCD, where CD was at the bottom surface, which is fixed at the surface there. वो CD क्या क्या है, surface को नीचे fix किया है. यहाँ पर देखो, ऐसे समझ सकते हैं आप. एक मिनट, सॉरी. यहाँ पर देखो, यहाँ पर है A B C D. ये CD क्या है, नीचे surface को fix किया है. A और B क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेस होने वाला है आगे. तो यहाँ पर देखो A और B क्या होता है, डिस्प्लेस होता है आगे when we apply force here tangentially. So A will get displaced to A dash, B will displace to the B dash. So there was certain change was there. That angle was known as phi. That angle is known as phi. So what is the shear strain? So shear strain formula was transverse distortion divided by original length. मतलब क्या है यहाँ पर, कितना डिस्टॉर्शन हो गया, कितना चेंज इन लेंथ हो गया यहाँ पर, A to A dash और B to B dash, that is your transverse distortion, that is A to A dash or B to B dash, and the original length was here, that is the AD or BC, like this, that is the original standing length. This A changes to the A dash, then B changes to the B dash, so change in length was here, it is A dash, and here the originally it will remain as a AD there. So that we are going to take it as A dash divided by AD or B dash divided by BC. That is your phi. Okay, that is the shear strain. So this is the shear strain which we have learned. आवडलं तर नक्की लाईक करा विसरू नका.